आप बता दीजिए कितना अमाउंट अवार्ड किया है ट्रायल कोर्ट ने? we have claimed rupees 4 lakhs per month. पर मंथ? अच्छा, Per month. क्या पद करते हैं And आपके पति? DG police, he was उनको DG. कितनी पेंशन मिलती है? 4 लाख रुपए महीना मिलती है पेंशन? My lord, the pension, he was in service at that particular point of time, my lord. कितनी तनख्वाह मिलती है? डीजी की तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है। हमें 4 लाख रुपए नहीं मिलती है, इसलिए हमें मालूम है। My lord, paragraph number डीजी इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया My एंड lord, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्विवेलेंट टू द हाईकोर्ट जज। नाउ हाईकोर्ट जज डज नॉट गेट 4 लाख रुपीज। आपको My मिलते lord, हैं। आपके ट्रायल कोर्ट में वकील लोग अगर कानून नहीं पढ़ते तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। my lord, this is the petition filed by the wife, my lord, जी against whom divorce petition was filed by the husband. जी She moved an application under section 24, my lord, for parental maintenance, जी and that has been disposed of, my lord, without adverting to any facts, my lord, as to how the amount which has been awarded by the court जी। is sufficient for her to maintain. Or आप बता दीजिए कितना अमाउंट अवार्ड किया है my ट्रायल lord, कोर्ट ने? we have claimed rupees 4 lakhs per month. पर मंथ? अच्छा, Per month. क्या पद करते हैं And आपके पति? DG police, he was उनको DG. कितनी पेंशन मिलती है? 4 लाख रुपए महीना मिलती है पेंशन? My lord, the pension, he was in service at that particular point of time, my lord. कितनी तनख्वाह मिलती है? डीजी की तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है। हमें 4 लाख रुपए नहीं मिलती है, इसलिए हमें मालूम है। My lord, paragraph number डीजी इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया My एंड lord, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्विवेलेंट टू द हाईकोर्ट जज। नाउ हाईकोर्ट जज डज नॉट गेट 4 लाख रुपीज। आपको My मिलते lord, हैं तो my lord, if the application is seen, my lord, the कितना resources, कितनी the कितनी financial मेंटेनेंस resource, दिलाई है नीचे? 4 lakhs in lump अरे sum. आपने 4 लाख माना है, अन्य प्रावधान में कितनी दिलाई गई है इनको मेंटेनेंस? There is no other. कितना कितना दिलाया है इनको? इनको 4 लाख रुपया लमसम में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ एनी मंथली अमाउंट. खुद क्या करती हैं ये? शी इज अ हाउसवाइफ, मैडम. अच्छा, दीज आर द एडमिटेड फैक्ट. वर्तमान में कोचिंग चलाती हैं। नहीं, फाइंडिंग. भोपाल ग्वालियर के बैंक में खाते हैं तो म्यूचुअल फंड में 23,88,000 रुपए जमा है। ये गलत है क्या? ये सारी ये सब गलत है सर, ये सब आप ये डिनाइड है. बैंक अकाउंट लाइए, एफिडेविट दे दीजिए कि कितने जमा है। अरे एक काम करिए ना, यू फाइल एन एफिडेविट दैट व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम एंड हाउ मच मनी इज लाइंग इन योर बैंक अकाउंट्स। That, my lord, the findings are there. My lord, if I may be permitted to जी read paragraph number 5, my lord. हाँ। ये मामले में यह निर्विवादित है कि उभय पक्ष परस्पर विवाहित हैं। वर्तमान वाद अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का आवेदक द्वारा आवेदिका के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदिका ने उपस्थित होकर वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। स्वयं आवेदक के अभिवचनों से ही उसका भारतीय पुलिस सेवा में उच्च पद पर आसीन होकर लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होना निर्विवादित वकील है। साहब, उनके उच्च सेवा में आसीन होने से there will be no presumption of income from other sources. My lord, इनकम सैलरी सर्टिफिकेट जो उसी की तो इनकम देखेंगे। my lord, if may kindly see the paragraph number 2 of the application, my lord. Application is annexure P1. That may kindly be seen, my lord. The specific sources and resources there that has been disclosed, my lord, in the application. ये कौन जज साहब हैं ये भाई? Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post. As non-applicant has admitted for the learned, नहीं ऐसा लिखिएगा, this miscellaneous petition is filed being aggrieved of order dated 13 March 2024 passed by principal judge family additional judge to the principal judge family court Bhopal in RCS HM 860/2020, comma granting lump sum amount of rupees 4 lakhs as interim maintenance oblique cost of litigation oblique litigation counsel fee instead of granting monthly maintenance, despite admitting a fact that respondent husband is drawing pension of rupees 1,12,200 plus dearness allowance on it, comma impugned order appears to be suffering from lack of applicability of mind and is therefore assailed. Next para. Operation of impugned order is stayed. As an interim measure, it is directed that respondent shall pay a monthly sum of rupees 50,000 in favor of the petitioner towards the maintenance, full stop. If he is paying maintenance under any other order of the court, then will be entitled to adjust that amount granted by any other court from this sum of rupees 50,000 per month, full stop. Besides this,
the respondent shall pay a sum of rupees 1 lakh towards the cost of litigation and counsel fee, etc. Full stop. इशू नोटिस कर दीजिएगा, रिटर्नेबल इन दी वीक कमेंसिंग 20 अगस्त